For all the right reasons, there has been lot many optimism over Mr. Arsene Wenger's visit to India for the forthcoming AIFF-FIFA Academies. Optimism among the fans because all of the fans, including yours truly, believe that finally we are going on to walk the path on our ultimate dream of the country's ultimate dream to qualify for the FIFA World Cup. I still believe it's step by step under 17 World Cup direct qualification from the under 19s to the under 20s and obviously to the Olympics and then to the FIFA World Cup. The multi-million-dollar question which every Indian always asks, क्या भारत कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहुंच सकता है? And all the more optimism, all of this optimism makes me more optimistic because there's a no compromise attitude which has been approached by the All India Football Federation. Purely because of the 50 scouted players, 38 have been found not up to the mark or up to the quality by the FIFA team, and the current regime of the All India Football Federation is going all out to find new talent. The modus operandi has already been set, and all of that makes all of us all the more optimistic. On your own storytelling platform today, which is Bol Dada Bol, Namaskar, my name is Nilanjan Datta, and today हम यही बात करेंगे youth coaching के बारे में, and obviously this is a subject very close to my heart, and some instances, no lectures, instances जो आप सुनिएगा और डिसाइड करिएगा कि हम लोग फुटबॉल में क्यों पीछे हैं. दिस इज मीनिंग नो ऑफेंस टू एनीवन. प्लीज पूरा एपिसोड पूरा सुनिएगा because I'd be giving you some instances from my own experience which I have seen in front of my eyes, which I have experienced. Listen to them and discover for yourself. उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे. So report आया है from the sub junior nationals and the Subroto Cup. There were 50 scouted players, but the FIFA team has found out that they are not up to the mark. मैं वो रिपोर्ट जो मैं पढ़ा है उससे कुछ कोट्स पढ़ना चाहता हूं. So an AIFF official says the academy is ready but we don't have players now. Then a coach from Spain, Sergio Fontronda, is already in Bhubaneswar, जो कि वहां पे स्काउटिंग कर रहा है, फिल्टरिंग कर रहा है. There's a difference between the eyes of Mr. Wenger and Sergio and our scouts. AIFF का ऑफिशियल कोई बोला है हिंदुस्तान टाइम्स को, मिस्टर धीमान सरकार का ये रिपोर्ट है. धीमानदा इज ए वेरी सीजन फुटबॉल जर्नलिस्ट, वन ऑफ माय डियर ओल्ड फ्रेंड्स, समवन हु आई ऑलवेज लुक अप टू. एंड देन सत्य जी का, मिस्टर सत्यनारायण का एक ऑफिशियल कोड भी है. दिस विल बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ओवर 3 to 4 months because FIFA is very clear about the scouting process being extremely thorough. We are finalizing the modus operandi of how to scout players from the youth leagues, which will have teams from academies, ISL and I-League clubs. The FIFA team also has conducted 2 workshops, one of them during Mr. Wenger's visit, and 6 super scouts have been identified who will help AIFF spot the players. Now all of that वो रिपोर्ट से मैं ये बोल रहा था. देखिए हम लोग देश में एक टेंडेंसी और ट्रेंड है कि जब भी कुछ आता है फैंस क्या करते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर एक ब्लेम दे देता है कि द फुटबॉल फेडरेशन टू बी ब्लेम्ड. और यहां पे सिचुएशन में कैन यू ब्लेम द AIFF? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज the AIFF administratively has done the right thing. टाई अप किया है फीफा से. मिस्टर आर्सेन वेंगर यहां पे आए हैं जिसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन मार्क ला ही नहीं सकते. एंड द प्रोसेस हैज बीन फॉलोड. प्लेयर्स हैव बीन स्काउटेड, अनफॉर्चुनेटली नॉट अप टू द मार्क. बिग ग्रीन टिक फ्रॉम माई साइड टू द फेडरेशन बिकॉज दैट मीन्स देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज बीइंग डन. बट यहां पे the AIFF president and his team, you can't blame them because you need to be depending on the technical experts to find you the right sort of players, and that's an aspect जो इंडियन यूथ फुटबॉल में और इंडियन कोचिंग में
at the youth level and across all structures, we have still been found wanting. So in comparison to other developed footballing nations all across the globe and especially in Asia, because हम क्या गलती करते मेरे हिसाब से, we always look to the West. अरे वेस्ट तो बाद में देखिएगा, पहले एशिया में देखते हैं हम लोग. Each and every country is going because उनका grassroots का coaching has been extremely much better than us. Coach education plays a huge role in all of that. Coach education हमारा देश में है, but given the vastness of the country, it takes time to settle down. Coaches are being taught. There are new set of coaches who are coming in. As much there's an old set of coaches who are also very good. But I reiterate, given the vastness of the country, we need more. वहां पे उस रिपोर्ट में मिस्टर सरकार का एक कोट था, there's a difference in the eyes of Mr. Wenger and Mr. Sergio and our scouts. और यही difference is just holding us back from taking that next step and jumping, if not to the highest level, to the next level. मेरी एक्सपीरियंस से मैं एक इंस्टेंस, दो तीन इंस्टेंस आप लोग को बताना चाहता हूं. डिसाइड फॉर योरसेल्व्स. ए फ्रेंड ऑफ माइन जो खुद एक एमेचरिश गोलकीपर रहा है, wanted a son to pursue football when the son was a kid. 7 साल का था वो बच्चा जब उसको मुझे अप्रोच किया कि भाई नीलू, कोई हमें कुछ जगह बता दे जहां पे मैं बच्चे को थोड़ी हैंड आई कोऑर्डिनेशन और फिजिकल मूवमेंट के लिए फुटबॉल सिखा पाऊं. ही इज अ डाई हार्ड फुटबॉल फैन. ही इज अ डाई हार्ड मोहन बगान सुपर जायंट फैन. ही वाज अ डाई हार्ड मोहन बगान फैन, मोहन बगान सुपर जायंट फैन. तो हमेशा बचपन से उसकी अपब्रिंगिंग इंडियन फुटबॉल पे हुआ है. ही वांटेड हिज सन टू प्ले द स्पोर्ट एटलीस्ट at that level, grassroots level, and then decide for the son decides himself, the parents take a call whether he is good enough or maybe he wants to make a career of something else. Fair enough. I appreciated it कि अच्छा कोई एक मेट्रो सिटी में जाके, not Delhi, some other metro city, नाम नहीं लेना चाहता कौन सी सिटी, जाके मैं बोला ठीक है, referred him to a coach, quite a reputed coach. नाम नहीं लूंगा, name withheld for all the best reason. Coach was very cordial enough. आप आइए, भिजवाइए. The guy came. Afternoon को around उनको कोचिंग में जाना चाहिए था. शाम को he called me up and he started kind of abusing me like anything. मैं बोला भाई क्यों, क्या हो गया? बोला किसके पास भेज दिया आपने? Because the guy which is a 7-year-old बोला था ग्राउंड का, which was मेरे हिसाब से अराउंड 600 मीटर था, बोला 4 राउंड लगाओ. एक 7 साल का बच्चा, 7-year-old, कौन सी देश में कोच बोलते हैं कि 4 चक्कर लगा दो, जब एक ग्राउंड मेरी नेकेड आई में 650 मीटर्स आपका पूरा एक सर्कल होता है मिनिमम, ज्यादा होगा कम नहीं. एंड ऑब्वियसली आफ्टर a round which the guy kind of managed, the kid kind of managed, he was feeling dizzy, he kind of threw up, and the dad for all the obvious reasons उसको वापस लेके गाड़ी में बिठा के चला गया. टुडे द गाय एक क्रिकेट किट लेके जाता है क्रिकेट खेलने के लिए. He's pursuing his MBA and still follows his hobby of playing cricket. समझ लीजिए प्लीज, दैट्स द ग्रासरूट कोचिंग वेयर वी आर लैकिंग. यह सच्ची कहानी है, मैं इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता. 7 साल रिहाइड्रेट 7 ईयर का एक बच्चे को बोला है 4 चक्कर लगा लो, एक ग्राउंड का 650 मीटर मिनिमम होगा. होता है कभी? और हम कहते हैं हमारा प्लेयर्स को तो खेल नहीं सकते, बॉल को सिखाए थे ढंग से नहीं गया है, कुछ नहीं कर सकते, इतनी पैसा लूटते. प्लेयर्स का क्या दोष है? ये सब उभर के तो प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं. So that's the, I'm not meaning to say all coaches are bad, please don't get me wrong, but that's the generic part. I'm generalizing out here, giving out instances because the report में हमें जो line अच्छा लगा, there's a difference in the manner or in the eyes of Mr. Wenger and Mr. Sergio and our scouts. That's the difference which is holding us back. ये तो grassroots coaching था. From my experience, this was a वर्कशॉप, दूसरा जो मैं बता रहा हूं, and it was an eye opener for everyone. Mr. Robert Ban, when he was the technical director in one of his earliest workshops in Delhi, New Delhi,
There were around 16, 17 coaches, elite coaches from all over the country who had come, who were called in fact, for a 2 or 3 day workshop. Mr. Scott O'Donnell was also involved. Obviously, Robert Barn was in charge of that entire session. It was extremely cold in Delhi. Very bahut thanda tha, and the workshop kicked off the next day after Baichung Bhutia's farewell match against Bayern Munich. Jawaharlal Nehru Stadium पे Baichung Bhutia का नाम लिया. We would be coming back to the great Baichung Bhutia. It needs special episodes to describe that man, the special player that he was. आज के दिन पे लोग बाइचुंग भूटिया को जो खेलते हुए नहीं देखे, the responsibility which Baichung Bhutia took, the accolades which he achieved all throughout his career, from the mid-90s to 2010 and even beyond in his walk away from the pitch but not far away from it. Indian football, for all the right reasons, was synonymous with one individual, Mr. Baichung Bhutia. आएंगे बाइचुंग भाई के बारे में बहुत 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 सारे कहानी है बाइचुंग का. तो anyway, I was diverting from the topic. Coming back, तो it was being held. So Mr. Robert Barn ने उन लोगों को कुछ सेशंस दिया है करने के लिए. All of those coaches, most of them, or I believe all of them, my memory kind of is fading away due to the age factor, now growing old. All of them have played for India. Some of them have even captained India. Most of them I have watched them, idolized them during my school college days. From the wooden galleries, playing for the various clubs, winning all domestic tournaments and leagues, and also while playing for India. They were my heroes. And they are my heroes, and they will be my heroes. Quality-wise, sublime quality players. All into coaching now, youth coaching mostly. So Robert Barn का एक ही रिक्वेस्ट था वहां पे, all practice sessions, warm up sessions need to be match centric. उनका एक ही रिक्वेस्ट था और यही ब्रीफ था. तो चल रहा है एक ट्रेनिंग सेशन, वार्म अप सेशन था. आई बिलीव इट वाज आधा घंटा का सेशन, बिल्ड अप फ्रॉम द बैक. 5 मिनट का वार्म अप सेशन दिया गया. देयर वर सेट ऑफ बॉयज जो लोकल एकेडमी से लाया गया है. एंड रॉबर्ट बार्न was a kind disappointed, and there were some other AIFF colleagues of mine who were in charge of that workshop helping him. I being close to him at that time, at moment, bole aap please come with me, media officer. He kind of struggled to pronounce my name at the initial stages, Nilanjan, because you are my translator, come. I went with him. So he asked the coach. So what is happening is, 2 sides of the ground, where the wing backs stay, one guy kicking the ball to the other. And this is going on between all the players, from one side of the ground kicking the ball to the other, the one chesting the ball down, right foot, left foot, and again kicking the ball back. Maybe right foot trap, left foot trap, outside, inside, and then again लंबा चल रहा है. तो रॉबर्ट बार्न डिसअपॉइंटेड होकर पूछा कि आप क्या करवा रहे हो ये? What are you doing? The guy, the gentleman was speaking in Hindi. I was a translator. बोले सर मैं वार्म अप करवा रहा हूँ. बोले इतना लंबा डिस्टेंस कितना है? बोले अराउंड 50 मीटर की डिस्टेंस होगा. बोले लवली. इन अ मैच वाज हिज क्वेश्चन. इन अ मैच, how many times will this situation occur that these two players in question will be kind of exchanging the ball in this parabola system, जो बॉल ऊपर से नीचे जा रहे without being challenged, that too at the defense और midfield में? कितनी बार होएगा आप बताओ? बोले सर शायद एक बार भी नहीं होगा, शायद एक बार होएगा स्विचिंग के लिए, बट इतनी पैरेलल स्विचिंग नहीं करेंगे, हम तो फॉरवर्ड स्विचिंग करेंगे. बोले यार लवली, यू नो योर बेसिक्स, आप क्यों करवा रहे हो ये? There was pin drop silence. बोले सर तुम्हें क्या करवा? बोले मैच सेंट्रिक. बोले आप बोलो मैच सेंट्रिक क्या है? एंड द कोच सेड यही तो मैं जानता हूं मैच सेंट्रिक है. बोले आप आइए. एंड एक बेसिक ड्रिल रॉबर्ट बार्न ने दिखाया कि चलो 7 ए साइड कर लो, और करके आप हाथ से बॉल थ्रो करके थोड़ी सी 2 छोटी छोटी इमेजिनरी गोल पोस्ट करके आप वार्म अप करो. स्वेटिंग आ रहे हैं. बोले आधे वार्मिंग अप क्या? बोले इज दिस मैच सेंट्रिक? बोले या मूवमेंट कर रहे हैं क्या? Ball low, whenever someone catches the ball, it doesn't move, it gives it to someone else who the entire team is moving. ये basic drills होता है, आप भी बहुत सारे जगह देखे हो. बोले is this match centric? बोला हाँ मैच पे ऐसे होता है. बोले तो ऐसे करवाइए. कहानियां खत्म नहीं होता, कहानियां से शुरू होता है. I was embarrassed because a great player. और उसने हमें after the match, after the training session बताया, निरंजन इतने सालों मैंने क्लब खेला, इतने साल मैंने इंडिया खेला,
इतनी छोटी सी बात मुझे कोई नहीं बताया. नो वन टोल्ड मी दिस कि जो मैं करवा रहा हूं दैट्स नॉट रॉन्ग बट दैट्स ऑब्सोलीट. ये नहीं हो सकता. मैच सिचुएशन नहीं है ये रेगुलर कि आप बॉल लो और इधर से उधर दो, वो लंबा लेके इधर से उधर. हाफ टाइम में देखिएगा कि प्लेयर्स ऐसे करके ट्रेनिंग कर लेते हैं आज के दिन पे भी. दैट्स एसेंशियल. लॉन्ग बॉल प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, रिसीविंग, ट्रैपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बट इट कैन नॉट बी ईच एंड एवरी टाइम यू आर डूइंग इट. बोले और इतने सालों मैंने खेला, दैट्स बीन अ वार्म अप. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहां पे. बोले एंड ऑल दीज इयर्स ही हैड ए career spanning at the top flight level of domestic football and played India for almost career spanning over around 15 years. बोले no one in my country ever told me this. आज मैं ये लेके जा रहा हूं मेरे youth coaching. He was already, all of them were into youth coaching. So that's what bogs us down. The difference in the spotting and scouting in the eyes of Mr. Wenger's team and Indian जो coaches scout किया, because they also have not been groomed in the right fashion. उसी का procedure चलता है coach education पे. And the most encouraging part of this entire episode is there's been no compromise from the All India Football Federation. Hats off. Find new talent, the new modus operandi. कितने स्काउट्स, ऑब्वियसली देयर आर टेक्निकल टीम, देयर इज अ टेक्निकल टीम आउट देयर. वो लोग डिसाइड करेंगे कौन सी स्काउट होएगा, वो भी डिसाइड करेंगे. वो डेफिनेटली वही दे आर दी काबिल लोग. हम लोग नहीं है. हम सिर्फ तो बोल सकते क्या देखे हैं मैंने. सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन नेशनल टीम कोचेस ट्राइंग टू टीच बेसिक्स टू नेशनल टीम प्लेयर्स, हाउ टू गो इन ए सिचुएशन 1v1, गो पास्ट समवन. बोले यहां पे आपको स्क्वायर पास करना नहीं है. यू नीड टू टेक दैट कॉल. 1v1 आप जाओ, निकलो अंदर, घुसो. नहीं होता, बिकॉज दे हैव नॉट बीन टॉट. प्लेयर्स को आप दोष नहीं दे सकते. हाउ मेनी टाइम्स मैंने कोचेस को देखा है बोलते हुए 2 players गोइंग ऑन फॉर द सेम एरियल बॉल. व्हाई? एक तो आपका पोजीशन लोगे, समवन हु इज क्लोजर टू द बॉल गोज. दीज आर बेसिक्स जो ग्रास रूट कोचिंग में सिखाया जाता है. मैं जस्ट कुछ इंस्टेंसेस बता रहा हूं. बट we have been lagging, but it was till now. The cream of the Indian talent would be training in the AIFF-FIFA academies. And again, special thanks from entire footballing fraternity and the sporting fraternity in the country to Odisha Sports, the government of Odisha, for the infrastructure, support, interest and the encouragement on a continuous basis, regular. आज के नहीं है. ओडिशा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा स्पोर्ट्स से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का टाई अप और जो ये मोव साइंड हुआ है, ये बहुत दिनों से चल रहा है. दे आर स्टिल सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. सो हैट्स ऑफ, बिकॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स लीडिंग बाय एग्जांपल, कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प नॉट फुटबॉल बट द कंट्रीज ड्रीम. देश का सपना साकार करने के लिए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं. एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे इंफ्रा कितनी देश में है आप जाके देखिए. आई विल बी कमिंग बैक टू एन एपिसोड वेयर मेनी अ टेक्निकल कोच से हमारा देश में इंफ्रा नहीं है. बहुत सॉरी, आई डोंट बाय दैट लॉजिक. इंफ्रा इन आवर कंट्री इज वेरी मच बेटर देन मेनी मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ऑब्वियसली हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स नहीं बोल सकते जहां पे छोटी देश में, बट द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ इंफ्रा दैट वी हैव, क्वालिटी इंफ्रा इज ह्यूज. लेट ऑल ऑफ दैट बी रिजर्व फॉर ए different day. On Bol Dada Bol, very much optimistic that the AIFF-FIFA Academy is in the right hands. There's no compromise being done. Follow us, spread the word. लोगों को बताइए, बोलते रहिए. बोल दादा बोल, आप बोलेंगे तभी लोगों को पता चलेगा. प्लीज हम लोग के वीडियो के बारे में आप लोग को गुजारिश है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं. वी आर नॉट इनटू द नंबर गेम एट ऑल. लोगों को प्लीज बताइए, जो लाइक माइंडेड पीपल है, जो स्पोर्टिंग पीपल है, जो नॉन फुटबॉल नॉन क्रिकेट फैंस है, उनको भी बताइए, क्योंकि ये सब स्टोरीज और कहानी सभी को पता होना चाहिए. स्टे सेफ, स्टे वेल. बोल दादा बोल. थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार.